Miss रोशनी तारिक दुरेद रुबाइशा बताइए व्हाट इज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म रोशनी खुदा के लिए बेटा प्लीज स्पीक अप ऑल द वे फ्रॉम फार अवे दुरेद थोड़ा ऊंचा करें रिकॉर्डिंग का वी नीड टू रिकॉर्ड मिस रोशनी डोंट यू नो दिस वेरी टफ क्वेश्चन okay it's a pathogen right no other word than what we say pathogen चलो मैं इधर लिख दूं candidate and my roll number is 0 सही है ना तो सबिया मोहसिन हरिया बेटा बताएं व्हाट इज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पैथोजन Transmissible disease. नो पैथोजन देखो ये आपको I was searching for that too. oh so the disease is yes transmissible disease yes what ribosome का फंक्शन क्या है मिस सबिया व्हाट डज राइबोसोम डू दुरेद oh makes oh man this connects Proteins protein synthesis. synthesis you know small rings of DNA that carry genes plasmid yeah Plasmid. circular DNA yes and controls passage of substances and sorry Membrane. yes सेल वॉल क्या करती है gives shape है ना gives shape to cell ये बेटा आपका Z क्या है flagellum yeah and the question is very funny easy 100 millimeter use this value to calculate actual length in micrometer अब आप मुझे बताएं कि 1 millimeter is how many micrometer oh my god we did this many times 1 millimeter is 1000 micrometer है ना आप बोलो 10 power 3 micrometer yes or no तो बच्चों 100 millimeter क्या होगा yeah 100 into 10 power 3 in total this will be how many 10 power 5 micrometer right but he says actual one ठीक है so अगर 100 millimeter होगी this much होगा तो बच्चों मैग्निफिकेशन कितनी है 50,000 टाइम्स है ना तो एक्चुअल कैसे आएगा वेरी गुड नहीं 10 power 5 over 50,000 गॉट इट माइक्रोमीटर देखो ना ये 100 तो जूम इन हो जाएगा ना जो एक्चुअल है वो 10 power 5 को डिवाइड कर सही है ना मुझे तो एक चीज मैं आपको बेचता हूँ $1 million पे तो मैं कहता हूँ इसकी प्राइस जो है इट इज zoomed in ये इतनी बड़ी हुई है प्राइस व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस नो $1 million पे आपने आपको सेल हुई है बट दैट वाज एग्जैजरेटेड टू 50,000 टाइम्स सो भाई साहब विल यू डिवाइड 1 million by 50,000 or 50,000 by 1 million भैया 1 million by 50,000 तो इस तरह जो जूम है ना उस पर use it as a specialized cell ये बताइए of a specialized cell human cell suggest the name of structure Z flagella flagellum yeah and function yes very good helps movement now that's it movement swim locomotion yeah you're all accept maximum is very generous बच्चों जीनस पहले वाली होती है ना वेरी गुड माशाल्लाह विब्रियो इज द जीनस एंड व्हाट इज स्पीशीज नो ये गलती नहीं करनी विब्रियो कॉल जब भी आप स्पीशीज लिखो दोनों लिखो जीनस ये है और बच्चों स्पीशीज क्या है विब्रियो कॉल advantages he is asking you advantages of binomial yeah because it is specific universal है ना it's universal
अब देखो ना, आप बिल्ली बोलोगे किसी को, अगर आप बोले बिल्ली है, कैट है, तो वो यूनिवर्सल नहीं है, इट्स नॉट एवरीवेयर। लाइक ह्यूमन, इंसान, बंदा, आदमी, दे आर लोकल नेम्स, बशर। But when you say Homo sapiens, that's universal. So binomial system means it is short name, it is universal. Explain how presence of bacteria. बच्चों, explain how presence of bacteria of this type in human causes diarrhea. One of the symptoms of cholera. Diarrhea is watery stool जब बनता है ना, और आपको पता है बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया रिलीज डैश, no, Toxins. yeah, toxin. Do you know what is that toxin? Chlorgen. Chlorgen, ठीक है। वो chlorgen क्या करता है बच्चों? अगर मैं इंटेस्टाइन बनाऊं ना, तो आपको याद होगा इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग है, लाइक यू नो cells which face the intestine, है ना? So you know these are the cells, for example. So bacteria will make these cells throw out dash. Anybody? Dash ions. Oops. Fluoride ions. Chloride ions. Very good. Abhiya Mohsen. बेटा, बैक्टीरिया पॉइजन रिलीज करेगा, दैट विल इन्फेक्ट दी सेल्स एंड दी सेल्स विल थ्रो आउट क्लोराइड आयंस। तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर पोटेंशियल विल बेटा बढ़ेगा, कम होगा? ल्यूमेन में, ल्यूमेन इज दिस गैप, तो वाटर पोटेंशियल विल बेटा, सॉल्ट्स क्या करते हैं? वाटर पोटेंशियल को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं? Third low. Lowers the water potential. यू नो सॉल्ट्स कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना सॉल्यूशन को। एक सेकेंड, अभी आंसर माय पॉइंट। तो सॉल्ट्स क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो इट मींस वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे? या तो बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन which makes, yeah, toxin makes dash released into lumen. Fluoride ions. Yes, ये explain है ना, this dash the water potential, देखो side W, water potential, Lowers the water potential. very good, lowers the water potential in the lumen. So intestinal cells, yes, release water along with, जब वो वाटर आता है ना, तो पता है उसमें along with sugars and salts भी आते हैं, ठीक है। So this loss of watery dash, Stool. yeah, is called diarrhea. This is more than 4 even. What we wrote down is enough. So which makes chloride ions. Toxin. This lowers intestinal cells, release or secrete water, loss of watery stool. And Shakir Abbasi is here. Done? अरे पिक्चर बना रही तो फिर यहाँ से जाना, मैं आप लोगों को वीडियो भी शेयर करता हूँ, और आप जो ना वो प्लीज यार देखो, आई वांट यू टू, वालेकुम सर। वालेकुम बेटा, वॉच द वीडियो। क्वेश्चन, ओ माय गॉड, वी हैव क्वेश्चन 2 पे, क्वेश्चन 1 पे, अ वेरी स्लो डे टुडे। यस, reindeer, zoom in करूँ, reindeer live in Arctic, there's no tree, and some months of reindeers eat grass, ferns and mosses. Reindeers are eaten by wolves and brown bear. Oh, it's very cool. देखो, yes, grass को खाएंगे, और क्यों खाएंगे? Ferns and mosses. Yes, and mosses. इन सबको Reindeer. reindeers. Yeah. And they will get eaten by wolves and brown bears. Yes. और बादशाह क्या बनाया हमने? Yes, food, very good. Food web. Brown bear, nice. 2 marks, 4 marks. List chemical elements that make up lichens. Lichenen.
It's information, it's alternative source of this, and is carbohydrate called glycan. So it's carbohydrate. So it must have C. H and O. Yeah. You know, Yeah. fats also have CHO. Yes or no? And but proteins have nitrogen as well. अच्छा, state करना है only one advantage of eating this. Obviously, carbohydrates give you Energy. very good source of energy. Sir, Use your the knowledge. card. Use जी बेटा. Okay. Nothing. Sorry. Use your knowledge of how cell function is controlled to suggest why other animals are not able to digest this. Because they don't have, suggest करना है आपने, because they don't have dash. E से. Enzymes. Yes, जैसे हम घास नहीं खा सकते ना, because we don't have dash enzyme. C से. Cellulase. It's a past paper question because other animals don't have Cellulase. Okay. नहीं बेटा enzyme to digest. Yes. Like an. और आप बताओ use your knowledge of how cell function. क्या होगा? Because gene which codes for this enzyme, I mean the one that breaks down lichen, yeah? Is that? Yeah. Absent. Yeah, is switched off or absent. देखो हमारी बॉडी में ना आप सोचेंगे या तो सेलुलोज है ही नहीं वो या वो शो नहीं. Do you think we have cellulase? कुछ लोग कहते हैं कि सेलुलोज है because maybe once in the history we were herbivores. Have you heard of this? हाँ, कुछ evidence है ना लोगों के पास. You know, big evidence क्या है? Appendix. Like Darwin's theory. Yeah, appendix. Appendix जो है ना वो किसमें है? Herbivores में और हमारे पास भी. और एक और भी है पता है कि हमारे पास जो पीछे ना टीथ स्ट्रक्चर ग्राइंडर ये herbivores में. Okay जी, start up giving names of P, Q, R, S, T. Going to Rubaisha. Miss. नहीं छोड़ो दुरेद मुझसे पूछते हैं ठीक है ना प्लीज वेट मुझे फिर याद नहीं आता जो रिस्पॉन्सेस स्लो है ना वहां. मिस्टर रुबाइशा व्हाट इज P going to lungs? Anybody? Pulmonary artery. Pulmonary artery. It's open house square. Anybody can guide me, please. Yes. And what is R? Q. R is Renal renal artery. Renal artery. Oops. अभी आप मोशन. नींद पूरी क्या करें? पूरी रात पढ़ते हैं मुझे लगता है ना. आप में से कौन है जो पूरी रात पढ़ता है? Hepatic vein. थोड़ा सा बायो का एक दो पेपर भी काटिए. Pulmonary vein. बायो को आप लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है बायो. I never had. आप मुझे क्वेश्चन तो नहीं भेजी. देखिए आप इतने अच्छे भेजे रोशीन. अभी एक भी पेपर नहीं भेजा मुझे. ये रिकॉर्डिंग हो रही है. सर मैंने भेजा है एक पेपर. यस बड़ी मेहरबानी. यस लेकिन सर ठीक है ना मजेदार नहीं है. अभी आप मसलन क्यों पेपर नहीं भेजी? भाई सॉल्विंग सम बायो रुल जाएगी. चलो किडनी से बेटा वापस कौन सी आ रही है? रीनल. वेन. I never know why students don't take my subject seriously. हमारी एक क्लास होती है और बाकी टीचर के दो तीन क्लास होती है फिर भी. तो जिनको नॉन सीरियस है उनका क्या हाल है? अच्छा नहीं होना लाइक टू नोट. यस फ्रॉम किडनी यूर बैक फ्रॉम लिवर ना. Hepatic vein. वो बेटा हेपेटिक वाटर में या हेपेटिक वाटर में ना थैंक यू वो है इंटेस्टाइन से लिवर एंड यू आर गोइंग टेकिंग आउट फ्रॉम लिवर टू हेपेटिक वेन. वेरी गुड. तो ये लेबलिंग तो क्या कंपेयर स्ट्रक्चर ऑफ Q एंड R. बच्चों Q जो है ना वो वेन है और R एक आर्टरी है. R is an artery. तो याद रखो Yes. आर्टरी का वॉल थिक होता है थिन. वेरी गुड. तो ठीक सर. Q ब्रैकेट में आपने लिखा आर्टरी. ठीक है. हैज डैश वॉल.
Thick walls. Thick walls. Very good. Dash lumen. Narrow lumen. Thick. Wow. Oh, narrow. And narrow lumen, yes. And Yes. and some marker and dash valves. No valves. No No valves. valves. No valves. Very good. R is van. Well done. Yes. Van has. अब मैं आपसे ये नहीं कहते यार आप छुट्टी Valves. एब्सेंट क्यों होते हैं, देर से क्यों आते हैं, क्योंकि मैं कहता चले आप आ तो जाते हैं. I'm thankful. Can we pay a standing ovation? Standing तो नहीं हो सकता. Clapping for Iman. Yes. A लेकिन big इस वजह applause. से बाकी लोग they're not happy for you coming, so they don't clap for you. तो van R जो है ना van है. It has dash wall. Thin walls, Dash lumen. wide lumen, and Wide lumen. semi-lunar walls. Wide lumen. यार जबरदस्त. 7 in one. तो ईमान से हम पूछते हैं, ईमान why arteries have thick wall? To prevent. Sir, to Sir, withstand artery में the elastic pressure walls of भी the होती blood. हैं, आपने वो नहीं देखा. Very good, very good. वो कह रही है to withstand pressure, to prevent bursting. जबरदस्त. And narrow lumen क्यों होता है बेटा? To have more pressure, है ना? Yes. And why they have elastic wall? Yeah. Iman. Because. Oops. Sir, so to prevent the bursting. To even out blood pressure. पता है क्या? थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूं कि they have thick wall to prevent bursting. They have elastic wall to even out blood pressure, and they no semilunar valve. A narrow lumen for more pressure. Let me write this again, by the way. It could come a separate question as well. बच्चों प्लीज को ध्यान से आपने देखना है, ठीक है? आर्टरी का स्ट्रक्चर जो है ना यूं होता है. देखो मैं बनाऊं ये और नैरो सा lumen और ये वॉल इसकी बहुत थिक है, ठीक? नहीं वो तो एट्रिया और वेंट्रिकल की बात है. आर्टरी में तो देखें ऊपर भी जा रहे हैं नीचे भी जा रहे हैं. आर्टरी इसका आपने बस ये याद रखना है कि थिक वॉल. आप मुझे आप देखोगे डिजाइनर जो है ना उसके पास चैलेंज क्या था कि प्रेशर ज्यादा रखना है और बर्स्ट होने से बचाना है. तो थिक वॉल, बल्कि यहां से हम करते हैं नैरो lumen फॉर डैश प्रेशर. More pressure. Yeah, narrow lumen have for more pressure. Thick wall है to prevent bursting. और very very important third one, elastic wall क्यों है? Elastic wall है to even out blood pressure. देखो मैं आपको बताता हूँ, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड इज पुश्ड इनटू आर्टरी. क्या को बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लड इज पुश्ड इनटू आर्टरी. तो व्हाट हैपेंस? दे डायलेट ताकि बहुत ज्यादा राइज ना हो. समझ आ रही है आपको? नहीं आ समझ? सुरेश भाई, ब्लड इज पुश्ड इनटू आर्टरीज. आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जब आपने बॉल को कैच करना होता है तो आप जैसे ही बॉल हिट करती है आप हाथ थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ये सुनो, ताकि उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो. बट स्टिल वो हिट आपको फील तो होगी. तो जब आप ब्लड प्रेशर चेक करोगे, दे मोस्टली से 120/90. हैव यू एवर हर्ड दिस ना? तो 120 is the pressure when left ventricle dash contracts or relaxes. Contract. अब ये left ventricle contract, ठीक है? अमीर अदर लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड इज पुश्ड इनटू आर्टरीज, सो प्रेशर बढ़ेगा उनमें. यस और नो? Yes. Yes. तो आर्टरीज क्या करेंगी? डायलेट या कॉन्स्ट्रिक्ट? Dilate. यस, टू प्रिवेंट टू मच डैश इन प्रेशर. Increase in pressure. या वेरी गुड. और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा ना, रिलैक्स, तो ब्लड विल बी सक्ड बैक. जैसे Yes. ड्रॉपर यूं करके यूं करता है ना, ब्लड इज सक्ड बैक. तो फिर लो प्रेशर होगा आर्टरीज में, तो इसलिए वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं ताकि वो छोटी हो जाती हैं. सो दैट लेस ब्लड आल्सो डज नॉट मेक ब्लड प्रेशर टू लो. तो इवन आउट, इसको करो इवन आउट ब्लड प्रेशर. तो नेवर एवर मिक्स इलास्टिक with what? Thick. They are thick to prevent bursting. They are elastic to even out blood pressure. अच्छा, इसी तरह हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं डिस्कशन को वैन्स के ऊपर. तो वैन जो है ना, वो थोड़ा सा वाइडली मिलता है, ठीक है? इसकी शेप नॉर्मली इस तरह आती है ये, बट डोंट कंफ्यूज दिस विद आरबीसी. कभी कभी आरबीसी ये देखिए,
तो इनका वॉल इतना थिक नहीं होता जितना आर्टरी का है, बट देयर लिमन इज वेरी वेरी वाइड. So veins have wide lumen. Why? Anybody? To lower the pressure. No, pressure is already come up. To Wide minimize the lumen. resistance. Sir, so that the blood can easily flow through the vein. Very good. Iman, excellent. वो कह रही है कि blood क्योंकि risk बेटा slow flow हो रहा है ना, तो there is a risk कि blood can block there because pressure is too less. Right भाई? तो wide pipe जैसे wider pipe से पानी का flow comfortable. So to minimize the resistance. Then they have और क्या होगा? Wide lumen. Valves. ये तो हो गया. Yes. Seminal valve. अच्छा, कभी कभी पेपर में आता है वो कहते हैं विजिबल फीचर्स, तो आपने ये नहीं कहना हाई प्रेशर या लो प्रेशर, ठीक है, वो विजिबल नहीं है. सेमिनल वेल्व्स क्या है? टू प्रिवेंट डैश फ्लो. Backflow. यस. मुझे एक सेकंड है, करा के मैसेज है, सिर्फ एक. इकरा, मैं आपकी क्लास में अवेलेबल की, ठीक है, तो आप उसमें आ जाएं. अभी आपसे बात नहीं कर सकते, या फिर वेट फॉर एंडिंग ऑफ दिस. यस माय फ्रेंड्स, इसको फिल करा दें मुझे जल्दी से. वेन हैज डैश वॉल, thin walls, wider lumen, and seminal valve. Sorry, this question took a little more time, but okay, let's go next. Yes, why blood vessel S has low urea than R? So you need to expand. S has low than R. Because you know, Because it is filtered out in kidney. Wow, filter out in kidney, yes. R brings us a filter out. इसको क्या होगा? 3 marks है ना? Because R, because kidney, ये बेटा ये एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड, तो 3 मार्क्स. तो आपको होगा बिकॉज किडनीज डैश Filters. नेफ्रॉन है ना, फिल्टर्स यूरिया फ्रॉम डैश Blood plasma. and Yes. sends it down to dash. Ureter. Bladder. Little urea is dash R से. Leaves of. Yes. So R, which is renal vein. Oops, sorry. What is R? Yeah, renal vein. Renal vein has dash urea, more or less. Less urea. Remember, mark value of the question. This is easy question. Blood vessels U, high glucose, then T. U. Let's think of U. बच्चों, liver में Sir, glucose. because it takes blood from intestine to liver. एक second. U has more glucose than T. ठीक है, 3 marks हैं. तो T क्या है बच्चों? T is hepatic artery, U is hepatic vein, और ये liver है. जी अमीर हैदर, मैं आपको सुनता हूँ. जी बोले बेटा. Sorry, sir. बोले. Because the what do you call that? Hepatic portal vein takes blood from एक बेटा एक सेकंड ileum. रुकें प्लीज. मैं let's make the answer from mark value. तो हम कहेंगे because glycogen is converted to glucose in the liver. So U, इसको आप लिख सकते हैं hepatic vein has more glucose. यार इसके 3 मार्क्स कितना बनेंगे?
ओके देखो ये 3 मार्क वो कह रहे हैं कि ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज, शुगर नीड मोर शुगर, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन, ग्लूकोज। ये 3 मार्क्स हमने यहाँ से बनाए हैं। हाँ यस, स्टिमुलेटेड बाय ग्लूकागोन, ये आप लिख सकते हो अंडर दी Effect of glucagon. या yes, dear students, this is question 4. And he says use the information and figure this and this to explain how conditions in which these fish live may be challenging. Challenging. Okay. So 4.1 and 4.2. Okay, 4.1 pH of water increases. एक सेकंड, जब pH बढ़ती है तो देखो solubility of oxygen and water goes more or less. Yeah. More. So look, they prefer, they are looking for oxygen, है ना? They can't live without oxygen. But for oxygen, they go to acidic waters. Acidic water or alkaline water? No. Alkaline, है ना? So their enzyme may not work well. ये challenging हो सकता है. और इधर देख लो, यहाँ पे है कि when temperature increases, oxygen solubility decreases. Water For more, decreases. for more oxygen, they need to go to colder water. Yes or no? So actually, they will run to colder water and alkaline waters. Yes or no? Colder and alkaline, in which their enzyme may not work well. Yes or no? Oh yes. तो ये इस तरह सीन बन सकता है. देखो वो कह रहे हैं कि लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एट लोअर एंड ऑफ पीएच, है ना? Oh, you see the graph again. At low pH there is low oxygen. Yes, no? At high pH there is more oxygen. So ये एक challenge होगा, है ना? That if water pH is less, they'll be suffocating to death. And the same way, if they go into warm water, they'll be suffocating to death. So they need to stay in the cold water. But ये information handling है. For aerobic, as pH increases, this way, this data code. सही है, data code समझ तो क्या है? Like when temperature was 50, the oxygen was, ये आप लगा दो 6, 7, 5 point something. बच्चों समझ आ रही है ना क्या? Oxygen was 5.4. But when temperature was 0, the oxygen was 14.2. तो किसी भी बात में आप ये कह लो कि जब एविडेंस कोट करें, अब आपने, मैं लिखूं या इस ओके बेटा? बेटा समझ आ रही है ना? अब देखो, explain the advantage of Siamese fighting fish of also having this organ. अच्छा, gills that provide gas exchange surface. Siamese fighting fish also have an organ that has similar features to those of human lungs. The fish swims to the surface of water to take air from the atmosphere into this. अच्छा, तो आप मतलब जैसे हमारे लंग्स की तरह उनके पास एक ऑर्गन होता है, ठीक है बेटा? उसका एडवांटेज क्या होगा? they can take air from oxygen from air. Yes or no? So they can even manage to live in dash water, cold or hot? Hot water. Hot waters, and also the water with dash pH. Lower pH. या जो दुरेत कह रहे हैं बहुत important है कि they will be less affected by fluctuations in temperature and pH. Yes, gentlemen, next question. Quickly speaking, please. I don't call you by name. Anybody? अच्छा, इनमें 42 Nucleus. तो name the structure, named structure in each diploid cell that contains chromosome. तो diploid cell में वो कौन सी structure जिसमें chromosome होते हैं? No. Nucleus. Yeah. Next is type of nuclear division that makes gametes. Meiosis. Yes. And then the next is number of chromosomes in gametes. No. 11. 21. देखा? Oh, 21, sir. जैसे हमारे 46 23 gametes में. Any question? No, sir. Suggest how process of selective breeding and this can be used to produce desirable fish. ये बहुत easy है. You know, it's done by dash A से. Artificial selection. Yes, done by five marks.
fish with desired features are chosen by humans, है ना? Yes. ये वही पक्का आंसर है बेटा, made to dash. Breed. या और बच्चों और क्या होगा? प्रोसेसेस रिपीटेड फॉर डैश जी से generation. Ultimately dash for the desired feature या phenotype. बच्चों 8 से होमोजाइगस. जैसे अगर आप टॉल को ब्लैक को फेवर करो ना, बिग फर को तो हर दफा बिग फर शीट विद बिग फर तो अल्टीमेटली होमोजाइगस और बिग फर आ जाएंगे. यस और नो? एक नई स्पीशीज बन जाएगी. 6 minutes in hand. Identify the enzyme. Apply apple A and B. A और B पे उसमें एक apple and this dilute enzyme to this. Cut apple into small pieces. Put this into pieces A, B, C. Add 2 ml of enzyme. Apple and A and B. 2 ml of distilled water and C. Place each beaker 30 minutes there. Oh, juice production. तो बेटा कौन सा एंजाइम होगा? तो pectinase. Because pectinase breaks down pectin, है ना? To give you more outline the reason why C was kept. C में distilled water था, है ना? Control, yeah, act as a control. है ना? Old variable, yeah. It's comparison, है ना? Used to compare. Okay, use your knowledge of enzymes. Knowledge of enzymes to explain the result. ये बच्चों बहुत मजे का है. आप मुझे बताएं कि A, B, C. A में टेम्परेचर 45 था, वॉल्यूम 20. B में 90, इसमें एंजाइम डीनेचर हो गया होगा. यस और नो? Yes. और इसमें जो है ना टेम्परेचर तो ओके है, बट वॉल्यूम ये है क्योंकि इसमें उसने डिस्टिल्ड वाटर था, नो एंजाइम. तो यही सारी बातें आपको. दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर या गुड टेम्परेचर. तो आप कहें कि एट 45. नो सॉरी माय बैड बच्चों. एन ए मैं सिर्फ वर्ड लिख रहा हूँ, ऑप्टिमम टेम्परेचर या गुड टेम्परेचर. Sir, in C, can we say the pH level was higher than or lower than what सी was में तो मेरा needed? एंजाइम है ही नहीं, पीएच जो भी हो उसमें वाटर था ना. तो एट ए ऑप्टिमम टेम्परेचर मोर एंड मोर डैश yes बच्चों, yes complexes, yes or no? Yes. So more Products juice, are made. more juice. Yeah, we use. अच्छा बी में आप देखें, एंड बी एंजाइम गॉट Denatured. denatured at 90 degrees Celsius. So less या देखो no ES complex is made. और बच्चों एन सी no enzyme was there. So least juice made because pectin टूटा ही नहीं. Yes. कौन मुझे बताएगा? दिस क्वेश्चन इज 2 रीजंस व्हाई बैक्टीरिया आर सूटेबल. ये हमने कल भी किया है बहुत डिटेल में. Sir, they reproduce faster. या नो एथिकल Issues. Yeah. या कंसर्न्स. दे रिप्रोड्यूस फास्टर, कंटेन डैश. Plasmid. Yeah, you know, not all of them but most plasmids. And dash nutritional needs less. एक मिनट रुको बेटो. Less. कितना रह गया हमारा टाइम? खत्म हो गया पेपर. Sir, मेरे ख्याल से last question. What is J? J क्या है बेटा? J Cuticle. हाँ, क्यूटिकल इज सेल्यूलर नॉन सेल्यूलर.
इट इज नॉन सेल, ये सिर्फ पहले सेल मेसोफिल सेल या। और एल आपको पता है, and एल L इज is लोअर lower एपिडर्मिस। epidermis. तो ये तो आप मुझे बताइए, ये भी हमने पहले किया है, जे के एल एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फोटोसेंसिस। तो मुझे बताओ जे की क्या इंपॉर्टेंस ना। So it Transparent. allows to light. अगर आप जे को बच्चों जे को बोलते हो ना क्यूटिकल, तो आप करेंगे इट इज ट्रांसपेरेंट, Allows light to pass through. allows light to pass through to be used in photosynthesis। और दूसरा ये भी आप Photosynthesis. करेंगे, अगर ये आप इसको कहते हो ना अपर एपिडर्मिस, आई डोंट नो हाउ टू लेबल दिस ना, तो उधर भी यही होगा, ठीक है, टू बी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। और क्यूटिकल का एक और भी होगा बेटा, जो हमने मिस कर दिया है, क्यूटिकल का प्रिवेंट्स वाटर। जैसे हम सर्दियों में स्किन पे लगाते हैं ना जेल, जेल वगैरह, व्हाट यू कॉल इट, जेल नहीं, उसको क्या कहते हैं, मॉइस्चराइजर, यस नो, ताकि ड्राई Yeah. हो। तो के क्या था बेटा, पेरिसाइड मेसोफिल, इसका बताइए, पेरिसाइड मेसोफिल। It photosynthesizes because of Wait, having wait. more Absorbs No, chloroplast. light. no, 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 not photosynthesis, gentlemen. Explain the importance of these. So आपको explain करना है। तो हम कहेंगे contain, they contain Large amount of chloroplast. chloroplast, yeah, Chloroplast. to absorb, Sunlight. yeah, Light. light converters to chemical, and the L was lower epidermis, Used for transpiration. large. बेटा photosynthesis पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे contain Oh. dash stomata Light cells. Oh, to let हाँ guard cells क्या नहीं, to let dash enter. CO2. carbon dioxide and Yes, oxygen. so as to be used in dash. Photosynthesis. Photosynthesis. नेम एंड, यार ये आखिरी क्वेश्चन है ना, बस वर्बली करते हैं अभी। अब मुझे ये बता दें कि नेम एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ वन टिश्यू फाउंड इन वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड, Phloem. तो आपको ये टिश्यू जाइलम का बता दें बेटा, ये 4 मार्क्स बताएं। जाइलम का क्या Transport होगा, water. ट्रांसपोर्ट्स वाटर Water. प्लस मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू लीव, To sink. Water and mineral. और इसमें क्या लिखोगे बेटा, ट्रांसपिरेशन पुल, Uh, ट्रांसपिरेशन पुल होती है। और आप इसमें क्या लिखेंगे, इट इज जाइलम इज व्हाट, नो Lignified. नो सेल कंटेंट्स, सो देयर इज गैप एंड मोर वी कैन सी, आई डोंट नो इसका सही आंसर क्या, टाइम ओवर हो गया, तो वी आर एंडिंग ये, ठीक है। सारे बच्चे चले गए।